सो हेलो देयर, अपने 100 काउंट से कंटिन्यू करते हैं। मैंने 20 ले लिए हैं, 80 बचे हुए। फाइन। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पार्ट 10। ठीक है। उसके पहले इस वाले स्लाइड से स्टार्ट कर लेते हैं। इस वाले स्लाइड से स्टार्ट करिए। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ओके फाइन। तो ये प्रॉब्लम 21। ठीक है। तो ये थोड़ा रैंडम सा इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करें। क्वेश्चन पे करते हैं। नीचे लेके आते हैं। ठीक है। तो सोचते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करा, ध्यान से ऑब्जर्व करा, तो यहाँ पे कुछ चीजें काफी वियर्ड तरीके से डिजाइन करी गई हैं, ताकि ना दिखाई दे। बट अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इट गोना वेरी इजी, राइट? स्टार्ट करा। तो ऑब्जर्वेशन वन, ई की पावर इन्वॉल्व है, राइट? ई की पावर इन्वॉल्व। तो सबसे पहले आइडिया आता है कि एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्रिएट कर सकें ई की पावर के अंदर, मतलब वो पॉसिबल सा नहीं है। तो काफी ज्यादा हार्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिया। क्या लिखा हुआ है? ई रेस टू द पावर ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसमें से अगर इसमें से लिख रहा है कि एक्स कॉमन निकाल लें तो इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, राइट? ए की पावर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अच्छा, एक्स कॉमन निकालेंगे तो उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, निकाल के देखते हैं। एक्स अगर कॉमन निकाल लिया तो इट्स लाइक किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज ट्राई कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा था? ई रेस टू द पावर ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। अच्छा अच्छा। प्लस क्या फैक्टर बचा होगा? ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई रेस टू द पावर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। अब थोड़ा कुछ कुछ दिखना समझ आ रहा है कि इसमें एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस वाले फैक्टर में अगर ध्यान से देखें तो इट सीम लाइक कि एक्स को इस वाले फैक्टर में एक्स को डिफरेंशिएट किया गया, कुछ नहीं दिख रहा। इस वाले में साइंस को डिफरेंशिएट किया गया और इस वाले में इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया गया। ये चीज दिख रही है नहीं? तो मतलब कुछ ऐसा सा बन रहा है कि अगर हम ये लिखें एफ जी और एच, इस पूरी का डेरिवेटिव, राइट? इस पूरी का डेरिवेटिव, तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू बेसिकली, लेट अस अज्यूम एफ इज इक्वल्स e की पावर e रेज़ टू द पावर e की पावर x प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स, राइट? लेट अस कॉल gx as sin x, g as x, and h as sin x. So you can easily observe that one is that the expression given is basically it is given by it is basically f dash into g into h plus g dash f into h plus h dash f into g, and it is none other than f g h whole derivative, right? So basically it is dy dx of f g h dx. So that implies this can't cancel. It is FGH. I hope I'm clear. And you can easily put the values x sin x into e raised to the power e की power x plus x cube plus x. So in question they are calling that term as f of x. So I hope this is why I'm making blank. Okay. So f of x is x sin x. So f5 pi by 2 will be equal to clearly 5 pi by 2. That will be equal to JF to 5 by 2 into 3.14. That will be 15 plus 15.7 divided by 2. That will be 15 plus 1 by 2, 7.5 plus 0.7 by 2, that is 0.35. 7.85 divided by that will be 7. Fine? Okay. Hmm. Now what you can do is you can try this we have done. This I have discussed already, right? This is all I have discussed already. And this profile I have discussed in this 20 series as well. So what it is basically it is a r factorial डिवाइडेड ओवर व्हाट डू हम क्या करते हैं इसे बेसिकली इंग्लिश या बोल रहा हूँ ज़्यादा, हिंदी में बात कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम बेसिकली न्यू बर्नल क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, राइट? दो को प्लग करके एक नया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो इसमें वही करते थे, आर माइनस के फैक्टोरियल
के फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे देखा तो आर माइनस के 14 माइनस आर का जो सम का आ रहा है वो आ रहा है 14 माइनस के। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि एक बाइनरी कोफिशिएंट क्रिएट हो जाए कॉसेंट कोफिशिएंट्स वाला। तो 14 माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया फर्स्ट फैक्टोरियल के साथ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा तो दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर। तो व्हाट वी कैन राइट इज 14 माइनस के सी आर माइनस के फुल मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस के। ये तो हमने यूज कर लिया प्रोबेबली। हाँ जी। तो क्या बचेगा, एक सेकंड, ऊपर बचेगा 14 फैक्टोरियल, इसको हटा दिया। 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल 14 माइनस के फैक्टोरियल, that will be 14ck. It is basically a 14c 14 minus k c r minus k 14ck. That expression, this sum we have to evaluate. और यहाँ से r equals k, it is basically a 14ck 14 minus k c r minus k, r going between k to 14, r sorry basically r is the variable, r is going between k to 14, and there is a 7ck over 14ck, and the summation is on r, is that summation is on r, and r is going between, so sorry, summation on k is going between 1 to 7. I hope this is k equal to 0 to 7. Okay, k equal to 0 to 7, and 7ck by 14ck, 7ck by 14ck. ठीक है, तो okay fine. So here you can see r is variable on this, so this one come out, this is going to cancel this one. So it is basically 14 minus k c r minus k, sum is going between r equal to k to 14. So clearly it will be 14 minus k c 0 plus 14 minus k c 1 till 14 minus k c 14 minus k. That will be none other than, एक second, that will be none other than 2 raised to the power 14 minus k, right? And that's factors multiplied by 7ck. So it will be a 7ck 2 raised to the power 14 minus k, uh, going between k equal to 0 to k equal to 7. So at this step what we can do is we can do basically two things. The best method will be right, you can take 2 to the power 7 common, and what you can do is you can write 7ck 2 raised to the power 7 minus k, and 1 raised to the power k. And it is clearly from, if you vary k from 0 to 7, it will be 2 plus 1 raised to the power 7. So 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 7, that is 6 raised to the power 7. Fine. So the answer of this expression will be a raised to the power b, so 6 plus 7, that will be 13. I hope I am clear. Now let's move forward, and this is vector problem. So let us try this one. So we have given us some vector equations, right? So we have to solve for the x and y vectors. So the best part to solve this problem is you can observe the options, right? If you see the option, there is something b cross c, a dot c, etc. B cross c, a dot c. Okay. तो क्या करा इसको इस क्रॉस कर दिया, अगर इस वाली इक्वेशन को सी से क्रॉस कर दिया, राइट, और इस वाली इक्वेशन को सी से डॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डॉट सी, इसको इसको यहाँ पे था ए डॉट सी, तो इसको करा सी से डॉट, तो एक्स डॉट सी प्लस जीरो ऑफ कोर्स इज इक्वल टू ए डॉट सी, लेट कॉल इट इक्वेशन 1। और यहाँ पे है बी क्रॉस सी, इसको क्रॉस कर दिया सी के साथ, तो व्हाट यू कैन राइट इज वाई क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस एक्स इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, राइट। तो वाई क्रॉस सी प्लस सी डॉट एक्स into c vector minus mod c square into x vector is equal to b cross c। तो c डॉट एक्स किसके इक्वल है, a डॉट सी के। और यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो,
तो जो y जो c क्रॉस y है, तो यहाँ पे you can write if you write this fashion, x vector minus a vector is equal to minus of c cross y, that will be y cross c. Y cross c is x vector minus a vector plus c dot x. C dot x is a dot c. A dot c multiplied c vector minus mod c square into x vector. एक सेकेंड, वेट Hmm, what we have done is c cross x, okay, c dot x minus mod c square, right? That will be equal to a vector minus x vector, right? At this step, there's something missing. It is not actually y cross c, right? So this is c cross y. एक second. There is a y cross c. Okay, fine. That will be x vector minus a vector. Mm, okay, okay. Okay, let us do this once again. फिर से कर लेते हैं इसको. तो क्या कर सकते हैं? इस वाले बी क्रॉस सी चीज इसको क्रॉस कर दिया तो वाई क्रॉस सी प्लस. अच्छा हाँ, इसको पोस्ट क्रॉस करा कि प्री क्रॉस करा, ये हमने ध्यान नहीं दिया ना. पोस्ट क्रॉस और प्री क्रॉस, तो बी क्रॉस सी, तो वी आर डूइंग पोस्ट क्रॉस, राइट? मतलब प्री नहीं, पोस्ट है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है. सी क्रॉस एक्स क्रॉस सी आएगा ना. स्लाइट मिस्टेक. बी क्रॉस सी. ओके फाइन. So you need a y cross c, right? So y cross c will be of course x vector minus a vector is equal to minus c cross y. So that will be equal to x vector minus a vector is equal to y cross c. So from this equation you can substitute this as x vector minus a vector, and there it is b cross c, no doubt. And this you have to manipulate. So you can write minus of c cross x is equal to b cross. ठीक है. तो x vector minus a vector minus c dot x, and we have computed. Let us dot this equation dot with c. So x dot c is equal to a dot x. Sorry, we are dotting with the c now. So c के साथ this is 0, तो a dot c. X dot c will be this one, a dot c. C dot x into c vector minus mod c square x vector is equal to b cross c. So c dot x will be a dot c. It will be x vector minus a vector minus a dot c vector plus mod c square into x vector is equal to b cross c. So from there onwards, you can take a x vector common, x vector into 1 plus mod c square is equal to a vector plus a dot c vector plus b cross c. So x vector will be equal to a vector plus a dot c vector plus b cross c, all over 1 plus mod c square, right? So from this one you can compute x vector, that will be a plus a dot c vector dot b cross c. Okay, there is a a, right? So that option number a, and you can substitute that value and on this equation, x vector on this one, right? You have calculated x, so you can then use this equation, y vector is equal to b vector minus this one. Otherwise you can do one thing, right? uh, there's an involvement in b cross c, a cross c, right? So you can cross this equation. So let us cross this equation with c vector. So x cross c plus c cross y cross c is equal to a cross c.
We can substitute c cross y as, wait a minute, what we are doing actually, we are crossing this equation, right? Okay, fine. So what is c cross x? It will be a negative, it will be y vector minus b vector, y vector minus b vector, and that will be minus c cross y. That will be equal to a cross c. So a little more computation you need, and we are get to the answer. Y vector minus of b vector minus elemental of c dot y, c dot y c vector minus mod c square y vector is equal to a cross c. So you note c dot y, right? C dot y will be a, let us dot this equation. So c dot y will be equal to, dot with the c, is equal to b dot c. So c dot y will be equal to b dot c, right? C dot y, this expression will be equal to b dot c. So y vector minus b vector minus b dot c, c vector plus mod c square into y vector is equal to a cross c. So from that onwards, y vector into 1 plus mod c square is equal to a cross c plus mm, a cross c plus b dot c vector plus b vector. So you can calculate this one, right? B plus b dot c vector, a cross c. Let me check out. A cross c, b dot c, and b upon 1 plus mod c. Okay. Option number D is correct. Right? So this is a vector problem. I hope you find it good. But there is a much problem. So okay, fine. So let's move to the second slide first. That one, okay. इसको 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 करते हैं, थोड़े से आसान से भी करनी चाहिए ना। ठीक है, आसान तो क्या ही है। ये वाला ट्राई करते हैं, ये अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 and C and 20 है, ठीक। क्वेश्चन है बेसिकली ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन बेसिकली वाई एन इज इक्वल टू, ये दिया हुआ था 3 and C and अपॉन, आई होप ये था 3 and C and, हाँ ठीक है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा, अपने हाथों से क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। ये है, और हमें निकालना है लिमिट इन टेंस टू इन्फिनिटी, एंड ऑफ कोर्स नेवर, काफी नेचुरल सा है, मतलब नेचुरल नंबर है। 3 and C and ओवर 2 and C and रेस्ट टू द पावर 1/n, ये कंप्यूट करना है, ठीक है। ठीक है, मतलब ए बाई बी आ रहा है तो ए कुछ कुछ निकालना है, 2 से निकालना है, ठीक है। तो इसको एल मान लिया, तो लॉग सा ले सकते हैं एक्चुअली, तो लॉग ले, पहले इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है, फिर लॉग लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन और ध्यान से देखा तो क्या होगा, 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये 2n ही है, 2n है, ठीक है। तो ये 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा लिखा, n फैक्टोरियल, ये तो कट गया, ये बच रहा है बेसिकली 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकते हैं बेसिकली किस तरीके से, ऊपर वाले को ब्रेक कर सकते हैं और नीचे वाले को भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले काम करते हैं, यहाँ पे लॉग ले ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln l इज इक्वल ln 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1/n आगे आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट ले सकते हैं दोनों साइड, n टेंस टू इनफिनाइट, तो लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट 1/n ln ऑफ 2n plus 1 into 2n plus 2, so on 2n plus n, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये तो कट गया, 2n फैक्टोरियल कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पर ये जो चीज़ थी यहाँ पे आएगा और फिर आएगा 2n फैक्टोरियल, नो डाउट। और बचा है ऊपर n फैक्टोरियल, ठीक है। ये कट गया, 2n फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल कट गया, अब बचा हुआ है 2n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकते हैं फाइनली, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, इसको भी ब्रेक कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/n लॉन ऑफ
2n+1 इंटू से लेके 2n+n, इस वाले को ब्रेक कर लिया n+1 से लेके n+n तक, क्योंकि उसके बाद n फैक्टर रूल तो कैंसिल हो जाएगा, n+2 से लेके n+n तक. अब दिस वी हैव टू कैलकुलेट. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड बोथ साइड बाय n की पावर n, राइट. यहाँ से ऊपर नीचे अगर n की पावर से डिवाइड कर देती हो जाएगा 1/n ln 2+1/n से लेके 2 प्लस सॉरी 2n+n 2+1 माइनस ln 1+1/n into 1+2/n so on so forth 1+n/n. ठीक है. ये यहाँ पे लिमिट लेनी है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो ये हो जाएगा अगर ध्यान से देखो तो 1/n ln 2 + r/n, यहाँ पे ऐसे है. ठीक है, 1 बाय होल मल्टीप्लाइड में था, ln 2 + r/n, मतलब ये प्रोडक्ट में है ना, उसको सब में चेंज कर लिया और सिग्मा लगा लिया माइनस ln 1 + r/n 1 + r/n summation going between r equal to 1 to 5. I hope this was comfortable. Just infinity. That product we have breaken ln 2 + 1/n into 2 + 2/n. I hope this one is clear, right? Whether it's one difficulty, or you can do one thing, or you can get 2 + 1/n, 2 + 2/n. So ln 2 + 1/n plus ln 2 + 2/n. So that one. So let us convert into integral. So 1/n control dx 0 to 1 ln of 2 plus x minus ln of 1 plus x dx, right? This integration, and what you can do after that is you can take this and this. So it will be equal. Let's substitute 2 plus x equal to u in the first integral and 1 plus x equal to u in second integral. So you got as 2 to 3 ln u du minus 1 to 2 1 to 2 ln u du. You can evaluate this integral will be u ln u minus u 2 to 3. You can easily use by part. I will remember the integral of ln u ln u minus u because it's the most frequent. You should also remember. You have to remember the JEE. So fine. So 3 ln 3 minus 3 minus 3 minus 2 ln 2 minus 2 minus of 2 ln 2 minus 2 minus 1 ln 1 minus 1, right. So it will be 3 ln 3 minus 2 ln 2 minus 1 minus 2 ln 2, that will be 0 and minus 1. So plus 2 minus 1, right. So I have 3 ln 2 minus 2 minus 1 minus 2 ln 2. So plus 2 minus 1, that will be plus 1. 1 will get cancelled. It will be ln 27 minus 4 ln 2 ln 16 ln 27 over 16, right. So ln L equal to ln 27 over 16, तो L is equal to 27 over 16. तो काफी शानदार सा क्वेश्चन था, तो इसमें शक ही नहीं है. A by B था तो हमें निकालना था 2B minus A, so 2 into 16 minus 20, that is 5, right. This is how to calculate. Okay, और देखते काफी लंबा हो गया. Thank you.